In this video, we will continue the last question, law of demand, and here we will discuss how the law of demand is applicable in case of a market. Because we have already discussed how the law of demand is applicable in case of an individual in the last video, and so today we will discuss how the law of demand is applicable in the market where there are large number of buyers. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଚାହିଦା ନିୟମ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚାହିଦା ନିୟମ ବଜାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଜାରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ରହିଥାନ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜଣ କ୍ରେତା ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଚାହିଦା ନିୟମ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୋ here first we will know what is market or market and this market demand schedule or market demand schedule. That means in the market there are large number of buyers. So this can be explained with the help of a table and diagram. So in order to explain the law of demand in case of a market, we will take a table and diagram. ଆମେ ଚାହିଦା ନିୟମକୁ ବଜାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଏବଂ ଚିତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ସାରଣୀକୁ ଆମେ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥାଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ, एंड मार्केट रे हम कहवा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और बजार चाहिदा सूची। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और बजार चाहिदा सूची का कही था? इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी व्हिच all the buyers in the market wanted to purchase at different possible prices. बजार रे विभिन्न संभाव्य दर रे समस्त क्रेता माने क्रय करने चाहूबा गोटे द्रव्यर भिन्न भिन्न परिमाण को एक तालिका माध्यम प्रकाश कले ताहाकू बजार चाहिदा सूची बोली कहा जाए। सो हियर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड वी हैव टेकन ए सिंपल मार्केट। आमे एठारे चाहिदा नियम को आलोचना करने एक सरल बा एक छोट बजार आम उदाहरण नहीं जो बजार रे केवल दुई जन क्रेता रही अछंती। एंड हियर वी हैव टेकन ए मार्केट, सिंपल मार्केट, ए स्मॉल मार्केट वेयर देयर आर टू बायर्स ओनली, बायर्स ए एंड बायर्स बी। से दुई जन क्रेता अछंती एवं सेमानको आमे ए और बी बोली नेछु। तेणु बजार समग्र बजार चाहिदा ए और बी रो चाहिदार समष्टि अटे। So the total market demand is equal to the total market demand is the summation of demand of A and demand of B. बजार रे जहाँ क्रय होबो ताहले A और B क्रय करिवे। So the total market demand is the combination of the demand of A and B. So here we have taken the market demand schedule. Market demand schedule. So we have taken price of the good. आमे पहला प्रथम रूपण लेछु price of the good द्रव्यर दर RS in kg, केजी प्रति टंकारे, आर एस इन केजी, केजी प्रति टंकारे 20, 22, 25, 28, 30। यू कैन टेक सुगर, गुड बदल तुम नहीं पार, यू कैन टेक सुगर और पोटाटो और टमाटो एटसेट्रा। तुम्हें चीनी नहीं पार बा टमाटो नहीं पार बा जेकोसी द्रव्य को तुम्हें एठारे लिखि पार। सो 20, 22, 25, 28, 30। देन द डिमांड ऑफ ए इज इक्वल टू 10, 8, 6, 4, 2 and demand of B is 5, 4, 3, 2, 1. So the market demand is equal to 15. How we will get 15? 10 plus 5 is equal to 15. 8 plus 4 is equal to 12. Like that we have find out the market demand. So now after this we will explain the law of demand in the market with the help of the table को आम नहीं बा सारणी को लेकिन आम बजार रे चाहिदा नियम कार्यकारी किभली भाव में करूँगी आम ताहाको आम व्याख्या करवा। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज 20, buyers A wanted to purchase 10 kg whereas buyers B wanted to purchase 5 kg. So the market demand consists of 15 kg when the price is 20.
बजार रे द्रव्यर दर 20 टंका थिबा समय रे ए व्यक्ति 10 किलोग्राम क्रय करिया पई चाहूथबा बेले बी व्यक्ति आमे आकु किलोग्राम रे नै अछु केजी रे आमे नै अछु केजी रे आमे नै अछु केजी किलोग्राम रे आमे नै अछु सो ए व्यक्ति 10 किलोग्राम क्रय करिया पई चाहूथबा बेले बी व्यक्ति 5 किलोग्राम द्रव्य किनिया पई चाहुचंती तेणु बजार रे समग्र चाहिदा 15 किलोग्राम होई अछि 10 plus 5 is equal to 15. So when the price is 20, A wanted to purchase 10 kg, whereas B wanted to purchase 5 kg. So the market demand consists of 15 kg. Like that, when price increases to 22, बजार रे दर जेते बेले 22 टंका को वृद्धि पाउछि, the demand of A decreases to 8, whereas the demand of B decreases to 4. So the market demand decreases to 12. So बजार रे द्रव्यर दर 22 टंका को वृद्धि हेले ए रो चाहिदा 8 किलोग्राम को ह्रास पाउथबा बेले बी रो चाहिदा 4 किलोग्राम को ह्रास पाउछि अर्थात ए 8 केजी एवं बी 4 केजी द्रव्य 4 केजी किलोग्राम द्रव्य क्रय करिया पई चाहुचंती तेणु बजार रे चाहिदार परिमाण 12 किलोग्राम को ह्रास पाई अछि सेही परि द्रव्यर दर 28 टंका को वृद्धि हेले द्रव्यर दर 28 टंका को वृद्धि हेले ए रो चाहिदा 4 किलोग्राम एवं बी रो चाहिदा 2 किलोग्राम होई अछि सेही सेते बेले बजार चाहिदा 6 किलोग्राम को ह्रास पाउछि लाइक दैट व्हेन प्राइस इज 28 increased to 28 by that time A wanted to purchase 4 kg whereas B wanted to purchase 2 kg so the market demand reaches to 6 kg like that when the price increased to 30 per kg by that time A's demand is 2 kg whereas B's demand is 1 kg so the market demand consists of 3 kg एवं पुनर्बार बजार रे द्रव्यर दर 30 टंका को वृद्धि हेले ए रो चाहिदा 2 किलोग्राम एवं बी रो चाहिदा 1 किलोग्राम होई अछि सही समय रे बजार रो चाहिदा 3 किलोग्राम को ह्रास पाउछि एथिरु आमे देखुचे जे जेतेले द्रव्यर दर वृद्धि पाउछि धीरे धीरे वृद्धि पाउछि बजार रे चाहिदा से बजार रे चाहिदा क्रमशः ह्रास पाउछि here we can see that when the price is continuously increasing by that time the market demand the quantity demanded in the market is continuously decreasing and that is why it shows that or we can conclude that in the market also all the buyers wanted to purchase more at a lower price and wanted to purchase less at a higher price तेणु इथिरु आमे जानिले जे बजार रे मध्य कम दर रे समस्त क्रेता माने अधिक द्रव्य क्रय करिया पाई चाहुथुवा बेले अधिक दर रे से माने कम क्रय करिया पाई चाहुचंती तेणु बजार रे मध्य द्रव्यर दर एवं चाहिदा मध्य रे विपरीत संपर्क रही अछि दैट इज व्हाई we can see that there is a inverse relationship between price and quantity demanded in the market also that is why the law of demand is also applicable in the market now this table can be explained with the help of a diagram आमे एही सारणी को एक चित्र माध्यम रे आमे प्रदर्शित करी अछु एमा आमे एठारे मार्केट डिमांड कर नै अछु लाइक इंडिविजुअल डिमांड कर आमे बजार व्यक्तिगत चाहिदा रेखा परी आमे एठारे बजार चाहिदा रेखा आमे अंकन करी अछु हियर द मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ टू बायर्स एठारे से बजार रे केवल दुई जण क्रेता अछंती तेणु आमे क्रेता ए रो गोटे चित्र क्रेता बी रो गोटे चित्र एवं दुईटा को मिसाई बजार रो चित्र आमे नै अछु so here there are two buyers in the market that is why we have taken three diagram first diagram for buyers A second diagram for buyers B and third diagram for the market so आमे एठा लिखा छि A's demand B's demand A रो चाहिदा B रो चाहिदा and this is market demand ए दुईटा को मिसेले कोन होबो बजार चाहिदा होई थाए so in the diagram A आमे y अक्षर आमे सब कोन नै छु दर in the y axis we have taken price आमे y अक्षर कोन नै छु प्राइस एवं x अक्षर कोन नै छु क्वांटिटी डिमांडेड इन ऑल द डायग्राम्स सो दिस इज द DA means demand curve of A DB means demand curve of B DM means demand market demand DA माने A रो चाहिदा रेखा DA नै छु DB माने B रो चाहिदा रेखा and DM means market demand बजारो चाहिदा रेखा market demand curve so here we have taken P1 P2 एठारे नै पारो P1 P2 समस्तन को पई बाजार रे दर समान होई अछि
ए रो पई जहा दर अछि बी रो पई मध्य दर सेया अछि बाजार रे सेया दर अछि सो हियर P1 P2 P1 P2 P1 P2 then this is A रो पई M M1 N N1 Q1 Q2 so here now we can explain the diagram when the price is P2 when the price is P2 in the market when the price is P2 in the market A wanted to purchase OM बाजार रे दर जेते बेले OP2 अछि सेही समय रे ए केते क्रय करिया पई चाहूची OM परिमाण रो द्रव्य क्रय करिया पई चाहूची सेही समय रे B केते क्रय करिया पई चाहूची ON ए क्रय करिया पई चाहूची OM जेते दर केते अछि पिले OP2 अछि दर जेते OP2 अछि एटा किछि दरकार नै दर जेते देखो पिले OP2 अछि when the price is OP2 A wanted to purchase OM A OM किनिया पई चाहूची B केते किनिया पई चाहूची ON तो दुईटा मिसी बाजार केते होची OQ1 होई अछि ते सही समय रे जदि सही परी बाजार रे दर OP1 को ह्रास हेली दर जेते OP1 को ह्रास पाउ अछि OP1 को ह्रास पाउ अछि ए रो चाहिदा देखो वृद्धि पाउ अछि ए रो चाहिदा OM1 को वृद्धि पाउ अछि OM1 को वृद्धि पाउ अछि सही परी दर ह्रास हेली बी रो चाहिदा ON1 को वृद्धि पाउ अछि दर ह्रास हेली OM1 को वृद्धि पाउ अछि तेनु बाजार चाहिदा मध्य OQ1 रु OQ2 को वृद्धि पाउ अछि that means when the price is OP2 A wanted to purchase OM whereas B wanted to purchase ON and the market demand is OQ1 when the price is OP2 A wanted to purchase OM B wanted to purchase ON and the market demand consists of OQ1 because this market demand is the horizontal summation of individual demand बाजार चाहिदा पिले बाजार चाहिदा व्यक्तिगत चाहिदार आनुभूमिक जोगफल अटे आनुभूमिक जोगफल माने देखो OM1 एतकी हला ON1 एतकी हला ए दुईटा मिसी केते हला OQ1 हला एटा हला पिले हॉरिजॉन्टल एक्सिस एटा हला हॉरिजॉन्टल एक्सिस एटा हॉरिजॉन्टल आनुभूमिक रेखा आ एटा हला उलंब रेखा वर्टिकल एक्सिस तो आमे जो ए परिमाणटा पाइले OQ1 एटा होची OM1 जोग ON1 तो एटा को रेखार जोगफल अटे आनुभूमिक रेखार जोगफल अटे so that is why we get the quantity OQ1 in the market by taking the summation of the horizontal axis OM and ON so OM plus ON is equal to OQ1 so when the price in the market is OP2 A wanted to purchase OM B wanted to purchase ON so the market demand is OQ1 and when the price decreases to OP1 when price decreases to OP1 A's demand increases to OM1 A's demand increases to OM1 whereas B's demand increases to ON1 and the market demand increases to OQ2 that means here we find that in the market also when the price is decreasing the quantity purchased in the market the quantity demanded of the goods in the market is increasing and it shows that there is an inverse relationship between price and quantity demanded in the market and that is why like the individual demand curve the market demand curve is also downward moving downward from left to right तेणु आम एठारे कोन जानले पिले जे व्यक्तिगत चाहिदा रेखा परी देखो एटा ए रो चाहिदा रेखा एटा बी रो चाहिदा रेखा दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ ए दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ बी एंड दिस इज द मार्केट डिमांड so like the individual demand curve the market demand curve is also moving downward from left to right तेणु व्यक्तिगत चाहिदा रेखा परी बाजार चाहिदा रेखा मध्य बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी गति करूछि एहा कोन सूचित करछि it indicates the inverse relationship between price and quantity demand एहा बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी होइथिबा चाहिदा रेखा चाहिदा एवं द्रव्यर दर मध्य थिबा विपरीत संपर्क को सूचित करूछि तेणु बाजार रे मध्य विक्रेता समस्त क्रेता माने कम दर थिबा समय रे अधिक क्रय करिया पई चाहुतबा बेले अधिक दर रे कम क्रय करिया पई चाहुचंती
That is why in the market also all the buyers wanted to purchase more at a lower price and wanted to purchase less at a higher price. That is why the law of demand is also applicable in the market also. ତେଣୁ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି. And in the last part we will discuss the limit